Good morning friends, welcome to a new Monday, a new week and new goals that we all must have set for the upcoming week. तो जो सारे goals आप सभी लोगों ने सेट करके रखा है कि आने वाले वीक में आपको अचीव करना है, आपको रीच करना है, उन सभी गोल्स के लिए ऑल द बेस्ट कहते हुए हम आगे बढ़ेंगे एक नए मंडे के साथ, एक नए शुरुआत के साथ. सो लेट अस प्रोसीड अहेड और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस करना है. शुरू करने से पहले आपसे एक बात कह दें, today there was a slight delay because we are going to start a new SBI PO DI batch. तो जितने लोगों का भी DI section weak है comparatively, please go ahead and please prepare for the same. एंड आई होप यहाँ पे साउंड कोई इशू नहीं है एंड एवरीथिंग इज़ गुड और हम लोग शुरू करने के लिए तैयार है. सो लेट अस बिगिन विद द सेशन. एंड वन मोर थिंग, इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू सी 12 डिसलाइक बिफोर द सेशन इवन स्टार्टेड. तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं बिकॉज दैट शोज़ हाउ इम्पॉर्टेंट द थंबनेल मस्ट बी फॉर मैनी पीपल. एंड इसी के साथ हम आज के इस शो को स्टार्ट करते हैं, राइट? चलिए, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज द पॉजिटिव थिंग्स दैट मेजर योर success. Sometimes it is also the negative things that can show where you actually stand. Anyways, शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. So the first article we have here जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, that is making sense of the Wuhan. तो इसको हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस पूरे आर्टिकल में ये कहा गया है कि देखिए सिंपल सा बात है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, he visited Wuhan which is in China and that was an informal meeting. तो इस पूरे आर्टिकल में अगेन एन.के. नारायणन जी ने इसे लिखा है, फॉर्मर एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो उन्होंने सारे हाइलाइट्स और सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है दैट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, व्हाट इज़ इंडियाज़ व्यू पॉइंट, व्हाट इज़ चाइनाज़ व्यू पॉइंट, व्हाट शुड बी द आउटकम एंड व्हाट शुड बी आवर फ्यूचर स्ट्रेटजीज. बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट वन हियर इज़ द fruit of defeat. See, if you look at the Karnataka elections, then who came out victoriously? Even if you consider a question of morality, then it was Congress with 104, but then all the issues जो आपको न्यूज़ में सुनने को मिला होगा, whether there was any kind of trying to get other political members into the party, trying to get vote, तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब आगे क्या, The one, if you looked into the voting, तो फिर JDs को कम वोट मिला था comparatively, but now you will see that most probably somebody from the JDs can end up becoming the chief minister, right? Because already the BJP chief minister has resigned just after a day before the voting could actually take place, before the floor test. जब उनका trust factor को floor test करने जाने वाले थे, उससे पहले ही उन्होंने अपना resignation दे दिया है. The next is here about the rise of Sadar. तो ईरान, इराक, मिडल ईस्ट में दोबारा हमको ध्यान देना पड़ेगा. अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द मिडल ईस्ट विल बी द मैप प्रैक्टिस. अगेन मैप बहुत ज़्यादा इधर इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए होगा. नेक्स्ट इज द स्टीयरिंग रिफॉर्म इन क्लॉग्ड कोर्ट्स. इसमें बात किया गया है व्हाई आर देयर सो मेनी पेंडिंग केसेस इन केस ऑफ इंडिया. हमारे यहाँ पे कोर्ट में इतने सारे क्लॉगिंग, इतने सारे बैकलॉग केसेस जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा क्यों है? डू वी हैव अ साइंटिफिक मैकेनिज्म टू फाइंड आउट हाउ मेनी केसेस वी कैन डील वन सिंगल डे, और देयर विल बी जजेस हु सिट अप टिल मे बी 12 और मिडनाइट. क्योंकि लास्ट हिस्ट्री में अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि एक जज थे जो 156 ईयर हिस्ट्री में ही हैड टू सिट टिल मिडनाइट टू सॉर्ट आउट द नंबर ऑफ केसेस. सो क्या ऐसा नॉर्मल सिनेरियो है, और कैन वी साइंटिफिकली फाइंड आउट दैट दीज मेनी आर दी केसेस दैट वी कैन हैंडल इन वन सिंगल डे? सो वी शुड अप्रोच इन दैट मैनर, राइट? तो इसके बारे में इस आर्टिकल में बात किया गया है. तो इन सभी आर्टिकल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उसके बाद द फाइट फॉर सर्वाइवल, इसे डिस्कस नहीं करेंगे. दिस इज अगेन द कर्नाटका इशू. द डाटा कॉन्ड्रियम, इसको थोड़ा सा जस्ट लेंगे. और a just and equal code, we will discuss this article because the just and equal code is about the uniform civil code, that is your article 44 में जिसके बारे में बात किया गया है. 44 same right, so it's uniform. So remember, uniform civil code is article 44. So let's begin with the session and let us start with the important vocabs. So the first one here is vexed. What is vexed? VEX. Vex को हम किस तरीके से लिख रहे हैं यहाँ पे? Vexed. The meaning of vexed is of a problem or issue difficult and much debated, problematic. That means that issue which is
a very much debated issue, and also it is a रीजन फॉर द प्रॉब्लम्स. बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. नाउ यू कैन यूज इट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ आई एम वेरी मच और आई एम वैक्स्ड विथ योर एटीट्यूड. दैट मीन्स दैट आई एम annoyed, I am frustrated with your attitude. That is what you mean by I am vexed with your attitude, right? तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, मतलब एक हायर लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन जिसे हम क्या कह सकते हैं, vexed कह जा सकते हैं. सो इन केस ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप यू विल यूज द टर्म vexed. दैट मीन्स that kind of a situation, a problematic situation between India and China. The next vocab here is communic. What is communic? देखिए, communicate is another thing. Communic. Now after E you won't pronounce the complete E because there is this symbol on top of it, right? तो अब इसका meaning क्या है? An official announcement or statement, especially one made to the media. It means an official statement that, for example, India is making to the media, that I am going to visit Wuhan, or our Prime Minister is going to visit Wuhan. That means a official statement. That means an official statement जो उन्होंने प्रेस में रिलीज किया है, मीडिया में रिलीज किया है. But if we say that there is no communic, that means there has been no formal statement released to the media. That means this is an informal meeting जहाँ पे मीडिया नहीं होगा, जहाँ पे सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे और जिनसे भी वो मिलने जा रहे हैं वे होंगे, कोई मीडिया नहीं होगा. Why? Because this is informal. Okay, Monali is writing that I am vexed with my brother's attitude. Perfect, you can write it like that as well. That is how you use the statement. Next is sacrosanct. Now just break down sacrosanct. आपने sacred सुना होगा. Sacred is something of a higher level, or you can say a bit spiritual or bit correct. So sacrosanct के लिए remember, especially of a principal, place or routine regarded as too important or valuable to be interfered with. So just like sacred is too important, similarly sacrosanct is also too important to be interfered with. You cannot interfere with this kind of a sacrosanct situation, or this is so important and so valuable that you should not interfere with this person or with this situation. Next is tranquility. What is tranquility? The quality or state of being tranquil. That is a same situation like peace, but it's more of a calm and cool kind of a situation that of course has peace in it. So there must be peace for a tranquil situation. So the calm situation, the calm down and the peace situation. Okay, chalo, let's proceed further and let's start discussing the article. Again, the first one is between the India and China international relations, so we are going to discuss it in detail. First of all, this is about an informal summit. What do you mean by an informal summit? Where there is no communique, or where there is no statement to the media that we are going to meet. Because if you declare it in the media you are going to meet, then there will be a proper media following you with cameras and recording whatever was the conversation going on between you. Also, there will be diplomats who will approach that, sir, what was the results of the meeting? But now there will be no pressure of diplomats, there will be no pressure of the media. So it's completely informal. Let's proceed further. On the cards, let us discuss what is in the first article. Informal summit in Wuhan that was held on 27 to 28 April between the Prime Minister of India and President Xi Jinping. The outcomes is uncertain, however. The choice of China of Wuhan, the city situated in the middle of the reaches of Zhangte. So now let me summarize what is in this passage, what is in the first passage. Please listen carefully. And अगर आपके पास न्यूज़पेपर है, then you can also open the newspaper and you can also read the paragraph, and meanwhile I'll tell you what is there in this paragraph. In the first paragraph, they are saying that the Indian Prime Minister and the Chinese President Xi Jinping, both of them had an informal summit. That is, in the absence of media and in the absence of the diplomats of both the countries, these two people, they met. So where did they met? That is on the banks of river Zhangte, Yanztze. Now this is of importance to geography, and let us have a look in the map that where exactly is this location. So if we can show in the map this river, then we will please proceed forward and show it on our map. So
as that works out. I hope हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाया जा सके कि ये नदी कहाँ पे है. तो ये है इंडिया, उसके बगल में आपको दिख रहा है चाइना. अब हम जब इस मैप में जूम आउट करेंगे तो आप देखिए, और जूम आउट करेंगे इस मैप पे, और जूम आउट करके अब देखिए यहाँ पे आपको वुहान दिख रहा होगा. अब वुहान में और अगर हम यहाँ पे जूम आउट करेंगे तो आप देखिए कि थोड़े से राइट साइड में अगर आप वुहान के यहाँ पे देखिए जो रिवर जा रहा है यहाँ पे, तो उस रिवर का नाम बिल्कुल सही. ये देखिए, ये रिवर देखिए कितना सुंदर से ये जो एम शेप लगभग बना रहा है ये रिवर, दिस इज द रिवर. और यहाँ पे इस नदी के किनारे देयर वॉज दिस अनऑफिशियल समिट, राइट. चलो, let's proceed further. I hope you have seen the importance of this location. So what is being said is we did had a discussion there. Now according to the trust building exercise, with respect to India, we see it as a trust building exercise. See, in case of India, we see all the international relationships as a trust building exercise. But is the Chinese counterpart, or is the Chinese government too seeing it as a trust building exercise, or do they have another reasons like to combat the effect of US sanctions? आपको पता है कि US और चाइना का तू तू में जो है वो बराबर चल रहा है, and they have also imposed some sanctions on China, right? तो उस चीज़ से उभरने के लिए या फिर पूरे इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, व्हाट इज द रियल मोटिव बिहाइंड दिस थिंग? सो दैट हैज बीन डिस्कस्ड. और फाइनली नो कंसेशंस इस पैराग्राफ में बात किया गया है. दैट डजंट मैटर्स व्हाट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, द ग्रास रूट लेवल इज वी स्टिल हैव द डोकलाम इशू, we still have the Arunachal Pradesh issue, we still have your interference in the regions of Nepal and Maldives, and that is why we are yet not done with doesn't matters whatever meeting is going on, right? Chalo, let us proceed and let's see what do we have in the form of slides. So first thing is, this was an informal meeting in Wuhan, which is on the bank of which river? Wuhan is on the bank of river Yangtze. So you have to river Yangtze के किनारे वुहान है. First question, on the bank of which of the following rivers Wuhan is situated? Your answer will be Yangtze. Next, April 27 to 28, Prime Minister Narendra Modi visited Chinese President. What is the name of the Chinese President? Xi Jinping is the name of the Chinese President. Now, there is another factor. Just like there is a Make in India project, similarly, China also have, they also have this Make in China 2025. Now, you will see, whenever China builds a dam in some another nation, or whenever they proceeds with any kind of construction activity in any nation, they always give a deadline that before this date we will complete the project. So if India or China, if both of us approach to a country, say for example Nepal, that dear Nepal, we are going to build this XYZ hydroelectric power in Nepal. So in that case, whom will Nepal prefer? The country which is giving a deadline कि इस डेट से पहले भैया आपको बना के देंगे, or the country who is saying that yes we will make it. So a deadline is always there in most of the China project. Just like we have that by 2022 we will establish this goal. Similarly, China has this project Make in China 2025. Now we already know much about what is Make in India. So now let us look into what is this Make in China thing. So they are going to increase the number of markets. Already they are like globally selling the Make in China product at a really cheap prices. And they are also going to increase the enterprises, strategy and talents. इसके अलावा वो focus करेंगे on new information technology, about the control tools, aerospace equipment, high-tech ships, railway equipment, energy saving, new material, medical devices, agriculture machinery and power equipments. So China is going to focus on all these aspects according to the Make in China project 2025. Moving ahead, India, what is India's viewpoint? First of all, इसको हम बहुत ही स्ट्रैटेजिकली डिस्कस करेंगे. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. व्हाट इज इंडियाज व्यू पॉइंट अबाउट दिस वुहान समिट? इंडिया सेज दैट वी हैव अ शेयर्ड विजन, अ शेयर्ड थॉट प्रोसेस, एक दूसरे की जैसा हम लोग सोचते हैं, शेयर्ड रिजॉल्व, अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बेटर कम्युनिकेशन, ग्लोबल लीडरशिप रोल फॉर बोथ नेशंस. सो दैट इज वाई लेट अस हैव दिस वुहान समिट एंड लेट अस मेक द टाइज बेटर विथ ईच अदर. ओके.
ओके, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज वी आर ऑल्सो लिंक्ड विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री. अब हिस्ट्री से हम कैसे लिंक्ड है? इफ़ यू विल लुक ड्यूरिंग द टाइम्स जब इंडिया के अंदर बुद्धिज़्म प्रिवेल कर रहा था, यू विल सी हुएन सांग कमिंग टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन के टाइम पे हुएन सांग भारत के अंदर आए थे. फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा कि फाहेन भारत के अंदर आए थे गुप्तास के पीरियड में. सो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ चाइनीज़ ट्रेवलर्स जो इंडिया के अंदर, लास्ट में हुएन सिंह आए, फाहिन पहले आ गए थे. सो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ चाइनीज़ ट्रेवलर्स हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू स्पेशली बुद्धिज़्म. तो ये हिस्टोरिकली हम देखेंगे तो हमारे बीच में काफ़ी अच्छे टाइप्स हैं. नाउ आर गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी इज़ स्पेशली फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट्स, दैट इज़ सोच. देखिए बहुत अच्छा इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ देम इन आंसर राइटिंग एनीवेयर. सोच, संपर्क, सहयोग, संकल्प एंड सपने. So thoughts, contact, cooperation, determination and dreams. So these are the 5 principles with respect to which we can make our ties better with the Chinese counterpart. Then there is 3 points that you need to understand with respect to this entire summit. वो 3 points कौन से हैं? Number 1, there should be more such summits which will मेक दी रिलेशनशिप बेटर और हमारे बीच में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस बने रहेंगे. नंबर 2 इज वी बोथ शुड गिव मिलिटरी डायरेक्शंस टू आर military. We should give good communication and good guidelines to our military, क्योंकि इससे क्या होगा, चाइनीज़ मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री दोनों के ही अगर हम एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो एक दूसरे पे कोई एटलीस्ट पत्थर तो नहीं फेंकेगा. वी नो दैट वी हैव डिफरेंसेस, वी नो दैट यू आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट, बट वी शुड हैंडल दिस डिफरेंसेस विथ अ mutual sensitivity and we should not turn that kiddish that we are throwing stones at each other in the international border. इतना बचपना हमें नहीं करना चाहिए. We should grow up with respect to this. Then there is more work together jointly on economic project in Afghanistan. एक तो हमने मोर नंबर ऑफ समिट्स कराया रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए. दिस इज हाउ विल मेक द रिलेशनशिप बेटर. दूसरा हमने क्या किया, दोनों के मिलिट्री को अच्छे गाइडलाइंस दिए सो दैट दे आर नॉट बिहेविंग इन अ किडिश मैनर एंड देयर इज अ म्यूचुअल सेंसिटिविटी. That is how we manage the differences and respect the differences. Number 3 is the economic project in Afghanistan about which much detail has not been put in the public domain. So let it happen once, then we will get more information about it. ये हो गया बातें कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन समिट से. साथ ही साथ वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग टू काउंटर टेररिज्म एंड डायलॉग मैकेनिज्म. सो बातें करके, स्पीकिंग विथ ईच अदर, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द रीजन विच विल हेल्प टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द इंडिया चाइना border. Then there is also wider overlapping between our interests, that is the Chinese interest and the Indian interest. So this will also help out. And finally the most important thing here is जो हमारे यहाँ पे border issue है, how do you claim to solve the border issue? आप किस तरीके से इसे solve कर सकते हो? So there is the political parameters and guiding principles for the settlement of the boundary question. So we are trying to settle the question of boundary with respect to ये एक स्पेशल जो हमारे पास ऑलरेडी साइन हो चुका है एक डॉक्यूमेंट 2005 में. So we have signed the document. हमारे यहाँ से मनमोहन सिंह जी and the Chinese premier when Xiaobo, now he was the Chinese premier during those times, right? तो इस एग्रीमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, सी दिस इज अ वेरी रेयर एग्रीमेंट. वाई? बिकॉज बहुत कम ऐसे एग्रीमेंट होता है जो इंडिया के बॉर्डर लाइन को रिस्पेक्ट करता है with respect to China, because else China is always claiming कि हम और अंदर जा रहे हैं, वो नहीं अंदर आ रहे इंडिया के. So this is one of the very few agreements which is okay for India, जो हमें मंजूर है, ठीक है, ऐसा. So this is known as the political parameters and guiding principles फॉर सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री क्वेश्चन. तो इसे साइन किया था. बट नाउ व्हाट चाइना इज ट्राइंग टू डू, हाँ हमने साइन तो किया था बट इज द मीनिंग द सेम? तो वो इसको मिस इंटरप्रेट करने का कोशिश कर रहा है. दैट इज द क्वेश्चन नाउ. ऑल्सो नोबडी वांट्स टू give support to China openly, even though US President Donald Trump, even though he has a role to play with respect to denuclearization of the Korean Peninsula, और इसमें चाइना का भी हेल्प है, चाइना का भी सपोर्ट है. बट इवन आफ्टर दैट एंटायर थिंग, स्टिल
the US is not openly supporting China. So China has got real tough issues to solve. Also you see कि दोनों के बीच clash of war चल रहा था, दोनों के बीच आपका trade tensions चल रहे थे between China and USA in the recent past with respect to imports and with respect to tariff, right? So with all these things, with चाइना जिसका यूएस के साथ अच्छा नहीं बन रहा है, दैट मे बी द रीज़न वाई चाइना इज trying to develop the relationship with India so that they will continue to be a power in the region of इंडियन ओशन. तो फिर वेस्ट जो है वो चाइना को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है. इवन डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट सपोर्टिंग, इवन आफ्टर द एंटायर कोरियन पेनिनसुला इशू स्टिल दे आर नॉट सपोर्टिंग. नाउ चाइना इज ऑल्सो बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप विथ रशिया. प्रीवियसली इट वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट नाउ इट इज मेकिंग इट्स रिलेशनशिप मोर स्ट्रॉन्ग, सो दैट can lead to problems in the future. Then there is new equations with the West, including with Iran. Iran पे जब sanctions लगा हुआ था, at that time also you will see that Saudi Arabia, China were the countries जो ईरान से सबसे ज़्यादा import करता था oil का उस वक्त भी. At that time also they were importing good number of barrels. So that is the problem. Now also after the Second World War, there was bad relationship, that is not good relationship between China and Japan. But now you see recently they have visited Tokyo as well. Shinzo Abe से वो लोग मिले and they are trying to build strategic relationship there as well. Then leaders of China, Japan and South Korea, so वो तीनों भी सामने आके मिले. Why? For regional comprehensive economic partnership. Now we will talk about the regional comprehensive economic partnership. But आपने क्या किया? आपने शुरुआत किया सबसे पहले इतने सारे 5 principles, we are trying to build good relationship, but is the problem solved? क्या problem solve हो गया है? There is no concessions, there is no solution to the problem. That is what the author is saying कि इतना कोशिश करने के बाद भी जो problem है वो solve नहीं हुआ है. क्यों? Because number one, we still have the Doklam issue. China is still the driver of the Doklam issue. They said they will step back, but अभी तक कितना वो progress हुआ है. Whereas Doklam is of strategic importance to India as well. Number two, the Arunachal Pradesh issue. So India's position, they are first of all, they are saying that this is the international boundary, and they are also accusing India of further transgression in the Arunachal Pradesh region. They had the problem with the visit of Dalai Lama as well, right? Number three, the problem is they are trying to emphasize special emphasis क्या होता है, right? So they are trying to specially emphasize and मतलब किसी को इधर भड़काने का थोड़ा बहुत कोशिश भी कर रहे हैं. They are trying to emphasize on Nepal and Maldives, which because Nepal had good relationship with India since time immemorial, but now this relationship of Nepal is increasing with China. Then number 4, China-Pakistan economic corridor, where the Pakistan economic corridor is passing through the Pakistan occupied Kashmir. तो इतना सब कुछ का जवाब अब तक नहीं मिला है इंडिया को. साथ ही साथ दलाई लामा's activities, China, why China is doing this? Because they are, इंडिया ने थोड़ा सा दलाई लामा के एक्टिविटीज़ को यहाँ पे कर्ब कर दिया है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर द चाइनीज़ गवर्नमेंट. तो इसीलिए वो इन चीज़ों को कर रहा है. देन बेजिंग्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस एंटायर आर्टिकल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिएगा. The most important point here is that Beijing's defense budget 2018 यहाँ पे 8.1% increase हुआ है. ठीक है, why they have increased the defense budget? Because they want world class military, they want strong navy, air defense and they want to expand into the Indian Ocean. और देखिए किसी भी ओशन का राजा जो है ना वो कोई एक हो सकता है, तो या तो वो चाइना हो सकता है या तो वो इंडिया हो सकता है, राइट? सो इफ चाइना इज एक्सपेंडिंग, दैट मीन्स India will or may suffer some problem regarding the same. The next map that you see here is India's trade deficit. Okay, so the next map that you can see here is India's trade deficit. और यहाँ पे RCEP, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. तो इंडिया का जो ट्रेड रिलेशनशिप है विद द एशियन नेशन, सी
along with the Asian nations there are 6 other nations जो इस पूरे चीज़ में participate करता है. So what is that is total 6. Okay, so यहाँ पे कहा गया India's balance with Asian को अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, then you see चाइना का सबसे ज़्यादा इधर ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है. ट्रेड डेफिसिट चाइना का इधर आपको दिख रहा है. देन विथ एशियन कंट्रीज, देन विथ कोरिया, देन विथ ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड न्यूजीलैंड. तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है? वो चाइना के साथ बन रहा है. चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट सबसे ज़्यादा बन रहा है. राइट, सो दैट इज़ द इशू हियर. द नेक्स्ट आर्टिकल, अब इस आर्टिकल को हमने पूरा डिस्कस किया है. आई होप इस पूरे समय में यू गॉट द ऑल द इम्पॉर्टेंस, क्या प्लस पॉइंट था, क्या नेगेटिव पॉइंट था अबाउट दी वुहान इशू. नेक्स्ट इस आर्टिकल को एकदम शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे. द फ्रूट ऑफ डिफीट. इसमें बेसिकली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज अबाउट दी कर्नाटका post poll marriage alliance. So that is, first of all, you see that 104 seats से BJP came out with the single largest party. Now that is a question of morality. चलो ठीक है, high moral grounds and you have come out as the single largest party. But then there was pulling back on moral grounds as well, because उन पे इल्ज़ाम क्या लग रहा था, that the party had dirt all over with येदुरप्पा's रेजिग्नेशन. आपको पता है जिस दिन वो चीफ मिनिस्टर का स्वेरिंग सेरेमनी हुआ था, द नेक्स्ट डे ही रिजाइन. सो दैट इज़ वन इशू. एंड अनदर इज दे ऑल्सो अटेम्प्ट टू बाई वोट्स एंड सपोर्ट एंड दिस वाज एक्सपोज. तो यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि उन्होंने वोट बाई करने का कोशिश किया था जो कि एक्सपोज हो गया. सो दिस इज अगेन अ पॉलिटिकल थिंग, राइट. तो इसके बारे में इस पूरे आर्टिकल में बात किया गया था. देन देयर इज अबाउट द पोस्ट 2014 फेज. कांग्रेस सीम्स टू हैव अडॉप्टेड अ न्यू पैराडिज्म. पहले ये 2004 में दिस थिंग डिड नॉट वर्क आउट, बिकॉज दैट टाइम ऑल्सो there was a coalition between Congress and the JDs, but they did not realize the value of the smaller players. But this time they did realize, और उन्होंने ये कहा, इस टाइम उन लोगों ने क्या कहा, जो छोटा प्लेयर है, जो JD है, उसका रोल को उन्होंने समझते हुए ये कहा कि if there is an alliance that we will make somebody from the JDs the chief minister, right? So that is the thing. So you should realize the value of the smaller player. That's what they are saying here. Then Trinamool Congress का क्या कहना है? उनका कहना है that the JDs, the BJP को फाइट करने के लिए, if Congress is not sufficient to fight the BJP issue, then let somebody else come up, let the Trinamool Congress come up and let them fight, right? So that is what they have to say here. So ultimately this is a completely political thing that has happened. All you have to know from here is what is a hung parliament, and you can quote this as an example in the cases of discretionary पावर ऑफ द गवर्नर. तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. सो डज इट मीन्स दैट ही इज गोइंग टू एक्ट एज अ पर्सन हु इज बाउंड टू द रूल, द गाइडलाइंस ऑफ सेंटर? नो, द गवर्नर हैज हिज ओन डिसीजन मेकिंग पावर एंड ही कैन एस्टैब्लिश हिज डिसीजन मेकिंग पावर. तो उस केस में आप इस पूरी चीज़ को यूज़ कर सकते हो. द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज राइज ऑफ सदार. इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इफ ईरान डज नॉट प्ले spoil sports, Iraq could get a more inclusive government soon. This article is talking about, देखिए आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाओ. My main motive is that you should know how to read the articles yourselves, right? Anyways, so the next article is about Iraq's parliamentary elections which were held on 12th May, where Muqtada al-Sadr, now this person Muqtada al-Sadr, he is recognized as an enemy by the Americans. साथ ही साथ he is also not liked by most of the Iraqi establishment itself and also by the Iranian backers. So they do not like him. But this time he has brought in some changes. What are the changes he have brought in? He has the prime minister, now he has worked out his policies and he has tried to become, वो सभी ब्लॉक्स के साथ उन्होंने अपने टाइज को बढ़ा दिया है, क्लोज टाई उन्होंने एस्टैब्लिश किया है ताकि वो आगे आ सके, ताकि वो आगे बढ़ सके. सो दिस इज द एंटायर आर्टिकल, दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. सो दैट इज व्हाई देयर इज अ रिमार्केबल कमबैक ऑफ मुक्तबा अल सदर, क्योंकि उन्होंने अभी और काम अच्छा किया. सो दैट इज व्हाई दिस पर्सन हैज़ कम बैक. तो इनिशियल स्टार्टिंग उन लोगों ने किस तरीके से किया था? ही स्टार्टेड विथ अ बैड इमेज
with an enemy to the Americans and not liked by much of Iran and Iraq people. But now he has come back by correcting his image. So that is what the entire article is talking about. The next article here is a just and equal code, which is talking about the Uniform Civil Code. That is Article 44. Now, Indian Muslims should accept a uniform civil code that promotes gender equality and social equality. See, if there is a uniform civil code, then coming out of the religious aspects, plus point क्या होगा, आप religious aspects से बाहर आओगे, and there will be one single code for all the religions, for both the sex, male and female, for any section of the society and any social strata of the society. सबके लिए एक सिंगल कोड होगा और हम ये जो रिलीजियस बायस है उससे हम बाहर आएंगे, राइट. सो दैट इज व्हाट इज इन यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो ये कहा है ऑथर ने दैट शुड बी एक्सेप्टेड. अगेन हु इज द ऑथर हियर? ही इज मोहम्मद आयूब, जो बार बार इस सेक्शन में वो लिखते रहते हैं. नाउ 1955 to 56 पार्लियामेंट पास्ड अ सीरीज ऑफ एक्ट टू रिफॉर्म द लीगल प्रैक्टिसेस गवर्निंग हिंदूज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. 55-56 के समय में हिंदूज को गवर्न करते हुए बहुत सारी चीज़ें आपके वहाँ पे क्या किया, इम्प्लीमेंट किया. बट देन दीज कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूटेड हिंदू पर्सनल लॉ. मुस्लिम पर्सनल लॉ वॉज कोडिफाइड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर इन 1937 इन ऑर्डर टू इम्पोज यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट ब्रिटिश इंडिया. उसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी कोडिफाइड किया. बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू थॉट दैट द माइनॉरिटीज शुड नॉट गेट द जर्क और शुड नॉट be imposed on with an universal thing, and they should have their own independence. But that did not always work out good. तो ये बात यहाँ पे कहा गया है. Anyways, we should realize the pros and cons of the uniform civil code. So you can mention that in the column section कि वैसे तो बहुत सारे फ़ायदा है, but then you can't go for a blind implementation of one size fit all religion approach with respect to uniform civil code, because India का unity diversity जो है वो diversity बहुत ज़्यादा है. There are too many religions in the nation, there are too many aspects, and that is why everything should be covered, right. तो ये बात यहाँ पे कहा गया है. तो आप pros और cons जो है वो आप comment section में ज़रूर mention कर सकते हो. नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे है स्टीयरिंग रिफॉर्म्स इन क्लॉग कोर्ट्स के बारे में, कि इंडिया के यहाँ पे हमारे यहाँ पे अभी तक जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम सफ़र कर रहा है वो डिलेस क्यों सफ़र कर रहा है. नॉट बिकॉज ऑफ द लो नंबर ऑफ कोर्ट्स बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पेंडिंग केसेस. वाई देर आर पेंडिंग केसेस? बिकॉज देर इज़ नो रूल फिक्स्ड कि एक दिन में इतने केसेस देखेंगे एक जज. तो ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है. दैट इज़ वाई देर इज़ नो रिसर्च ऑन हाउ मेनी केसेस जज कैन टेक इन वन single day and in what time should this be resolved. So that is the reason, right. ये बात यहाँ पे कही गई है. Then there is a report of 2016 published by the Supreme Court that shows that the existing infrastructure, अभी हमारे पास जो infrastructure है, जो number of courts है, जो उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं, उसके तहत only 15,500 judicial officer against all India sanctioned strength of 20,558. तो जहाँ पे 20,558 जुडिशियल ऑफिसर्स होने चाहिए, वहाँ सिर्फ कितने हैं? 15,540. सो दैट इज़ अनदर रीज़न क्यों हम बैकलॉग्स को सफ़र कर रहे हैं. एंड देयर शुड ऑल्सो बी मॉडर्नाइजेशन इन दिस फील्ड. अब मॉडर्नाइजेशन आप किस तरीके से ला सकते हो? केस को जल्दी आगे बढ़ाइए और एक टाइम लाइन के अंदर आप उसको सॉल्व कीजिए. देन द पॉलिसी मेकर शुड एक्सपेंड देयर रिलायंस ऑन एम्पिरिकल डेटा एंड कोर्ट रूम टेक्नोलॉजी. कोर्ट प्रोसेस मस्ट बी मॉडर्नाइज एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इज मॉडर्न. अभी भी टाइपराइटर वहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट, बट वी नीड टू थिंक अबाउट बेटर अप्रोच. ठीक है, बेटर चीज़ें हमें यहाँ पे सोचना चाहिए. रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग appropriate court release data is thus the first step. तो यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा जो केस चल रहा था, that should the courtroom recordings be allowed. कोर्टरूम के अंदर जो भी चीज़ें होता है क्या उसका रिकॉर्डिंग अलाउ करना चाहिए. तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कठुआ रेप केस हुआ था, दैट इनह्यूमन केस, इन दैट केस रिकॉर्डिंग करने का डायरेक्शन दिया गया था. वाई? ताकि अगले दिन क्या प्रोग्रेस हुआ है, उसके अगले दिन क्या प्रोग्रेस हुआ है, हर एक चीज़ पता लगता रहे, राइट. सो सिमिलरली इन दिस case also the writer is saying कि recordings should be a number one step in this case. For optimal level of functioning, initiatives such as CIS must be supplemented with file tracking and knowledge management system. तो
टाइप राइटिंग से आगे बढ़ के फाइल ट्रैकिंग वाला सिस्टम, या फिर अगर आप यहाँ पे CIS इम्प्लीमेंट करते हो, और अ डिजिटल अप्रोच कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड. बेसिकली डिजिटलाइजेशन ऑफ द कोड आप अपने तरफ से इधर लिख सकते हो कि इसको डिजिटलाइज करो और इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ. ओके, सो इसके अलावा यहाँ पे एक और डेटा से रिलेटेड देयर वाज अनदर case that was here, that confusion among the numbers. So now यहाँ पे आंसर राइटिंग में या एक आंसर हमारे यहाँ पे आयुषी जैन का आया है, जिन्होंने सरकारिया कमीशन के बारे में मेंशन किया है that it was established in 1983. So I asked you about this question last जो हमने डिस्कशन किया था. साथ ही साथ 52 + 4 that is 56 + 4 that is 360. इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में भी हमने आपसे कहने को कहा था. So she has answered them all. That is 352, 356 and 360. राइट, तो इन तीनों इमरजेंसीज के बारे में आई डिड आस्क यू. नेक्स्ट यहाँ पे नितिशा चौधरी ने एक कोट भेजा है. यू शुड नेवर रिग्रेट एनीथिंग इन लाइफ. इफ़ इट्स गुड इट्स वंडरफुल, इफ़ इट्स बैड इट्स एक्सपीरियंस. ज़िंदगी में कोई भी चीज़ रिग्रेट नहीं करना चाहिए. कोई चीज़ अच्छा निकल गया देन इट्स गुड, इट विल मेक यू फील हैप्पी, इट्स वंडरफुल. एंड इफ इट्स बैड, इफ इट्स नॉट गुड, फाइन, इट्स एन एक्सपीरियंस. लेट्स मूव अहेड विद द एक्सपीरियंस, राइट. सो यू शुड नॉट रिग्रेट एनीथिंग. नैन्सी अग्रवाल ने भेजा है, पीपल आर नॉट lazy, actually their dreams don't inspire them. If you have dreams, then you can't be lazy. You will always work for it. You will stay frustrated for your dreams. You will stay motivated for your dreams, and you will stay hungry for your dreams. That's how you fulfill your dreams, right? तो ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते. अगेन द स्टेटमेंट ऑफ APJ अब्दुल कलाम. सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज सेशन. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो. इफ़ यू डिड लाइक इट, देन डू हिट द थम्स अप बटन बिफोर लिविंग द सेशन. एंड इफ़ यू डिड नॉट लाइक इट, देन यू आर फ्री टू डिसलाइक द सेशन, क्योंकि वैसे भी सेशन स्टार्ट होने से पहले आई वॉज वेलकम्ड विथ 12 डिसलाइक इन टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लाइक्स एज वेल. तो दोनों लोगों को हम यहाँ पे लाइक करेंगे. एक उनको जो इस सेशन को देख रहे हैं और लाइक करके जाएंगे, और दूसरे उनको जो ये सेशन स्टार्ट होने से पहले दे बॉदर्ड टू विजिट द प्लेस एंड दे बॉदर्ड टू डिसलाइक द सेशन. थैंक यू सो मच गाइज. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.